Good morning, everyone. My name is Aman Jain, leader at Region Entrepreneurship Cell. I welcome you all to Industrial Conclave, the scope of innovation in electronic sector for Aatma Nirbhar Bharat. In association with IEEE, I would like to I would like to let you know that today is IEEE Day. Today is IEEE Day. This industrial conclave from 6th to 10th of October. Some amazing webinars are linked for you all. I hope you all lead and gain from these webinars and get to know that what are the opportunities bring in front of you in electronic sector. Now, today our guest speaker, we have Mr. Sameer Sharma sir, CEO, Swaha Resource Private Management Limited, co-founder Digital Electronics, co-founder NPTL. He has completed his education in BSc Computer Science from DAVV and MBA in Marketing from NBM. He is also known as the Startup Man of India. Currently, he is running his incubation center for youth and startup mentoring. He has mentored a number of startups, amongst which four are national award winners. He is renowned journalist and columnist in national diaries like Dainik Bhaskar, Free Press, and Patrika. He has also been awarded with Sri Gardia International Award for Sustainable Practice in 2019. Now, I would like to call Mr. Sameer Sharma sir for a renowned lecture. Welcome, Sameer sir, to entire AITR group of electronics. Thank you very much. Thanks a lot. And first of all, I'll be very thankful to the Acropolis Institute, जिन्होंने आज ये opportunity दी है that I can talk to few of the young innovative minds of their college. और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम साथ में कुछ बातें करेंगे और ये जो चर्चा रहेगी ये जो एक घंटा रहेगा this will not be like that I am I would say I'm some expert and you are going to learn a lot from me. It will be a kind of a interactive session also. So I will share my experiences, my learnings, and I hope they will be very much fruitful for you. Whoever is thinking of creating or promoting their own startups, they have some ideas and they want to basically go ahead with that idea as their passion and profession both. So I'll be very happy to conduct this session. And we are going to have various, I would say, section in this lecture. First of all, जैसा कि subject में लिखा हुआ है for all the students that this particular industrial conclave जो आज से शुरू हो रहा है IEEE Day से, so that how the startups, the tech startups with their innovative minds, innovative ideas, innovative products or services, they can change the world and they can basically become the integral part of smart cities, ULBs, and other government initiated institutions and programs. So मैं आपको अपने कुछ अनुभव से ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपने स्टार्टअप्स को, अपने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को, अपने इनोवेशन को आगे ले जा सकते हैं. And what are the various opportunities which are there from the government side, smart city, municipal corporations, and other ULBs and PSUs. So we will talk about them. We will also talk about that what type of solution they are looking for. See, any idea cannot be taken to smart cities, to the villages, to the industries, or to public. The idea has to be of a specific type. So we will also talk about which type of ideas, which type of innovation is required right now in this scenario after this pandemic and for the development of the country, for the development of world, for the betterment of the society. So what type of idea should be there? I will also let you know about what type of researches, certifications, and agencies you should go for. So that will be great for your startup to pick up the pace as well as to get the success. And there are few most important things which are not related to government or technology or innovation, but they are the basics of any startup if they really want to get success. And I would say that would be the most important part of this session today. वो हम लोग आखिरी में लेंगे.
30 से 35 मिनट हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी जरूर लेंगे, जिसमें आप स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर हम बात करें सबसे पहले कि भारत में स्थिति क्या है, भारत में स्टार्टअप्स का सिनेरियो क्या है, और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, पर्टिकुलरली इनोवेशन में बात करें या टेक्नोलॉजी में बात करें, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, थर्ड लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द स्टार्टअप्स, and government of India is really doing a great effort to help these startups. Next is we have cities like Bangalore. So everyone knows that Bangalore is a hub where the startups are really picking up very well. And Bangalore is a place where this incubation is taking place in a great on a great level. उनका एक स्तर बहुत अच्छा है. They are basically into something really great. Just hold on. Yeah. So, जब हम इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज या स्टार्टअप्स अपनी जगह बना सकते हैं स्मार्ट सिटीज में, यूएलबीज में, गवर्नमेंट में, या कैसे वो बड़ा हो सकते हैं आज की तारीख की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेसिफिकली देयर आर टू सेगमेंट्स, वन अर्बन एरियाज, सेकेंडली नॉन अर्बन एरियाज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब मैं अपनी बात करता हूं, मैंने अभी पिछले करीबन 3 सालों में करीबन 5 से 7 ऐसे स्टार्टअप्स में अपना सहयोग देने की कोशिश की है, और ईश्वर की दया रही कि वो अपने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडिया की वजह से दे ऑल आर सक्सेसफुल. And they are not only working in Indore, they all started from Indore. Few of them are started from a lower city than Indore, like Ujjain. So वहां से भी कुछ शुरू है. तो वहां से जब हम बात करते हैं शुरुआत की, तो ये सभी सक्सेसफुल हो पाए बिकॉज उनका जो आइडिया था वो बहुत ही ज्यादा टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी और सोसाइटी था. सो द फर्स्ट थिंग about any innovative idea, whether it is technical technology based or not, is that the idea or the solution which you are talking about, that solution should be related directly to the public. If it is going to affect on a mass level, then it would be a great idea. Then the probabilities of getting it successful is much more than any kind of a research or innovative product. So let's talk about a story, स्वाहा, जिसमें जो आईआईटी इंदौर के एलुमनाई हैं, इनके 3 दोस्तों ने जो शुरुआत किया, तो द आइडिया वाज दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन वेस्ट मैनेजमेंट. And waste management, those days when they started in 2016, it was absolutely a new industry, and people do not have any idea that waste management can be a startup. वो उसको सिर्फ कबाड़ी और कचरे का काम करने वालों के रूप में जानते थे. So when they came up with this idea, the idea was not to basically make a compost out of waste, to make energy out of waste. The idea was that they wanted to give a solution to the urban areas जो बहुत गंदे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ, हाइजीन, पूरी पॉपुलेशन पे बड़ा इफेक्ट जाता है. ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, वो सॉल्व करना था. अब वो सॉल्व कैसे करें, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आइडियाज पे काम किया, और वो सारे आइडियाज, चूंकि ये वेलफेयर से जुड़ा हुआ था सोसाइटी से, वो सारे सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इससे सीधा फायदा रेसिडेंट्स को होने वाला था. और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी पीएसयूज हैं या यूएलबीज हैं या इंदौर नगर निगम की हम बात करें, जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्टअप को वेलकम किया, बहुत सपोर्ट किया, और आज स्वाहा जो है वेस्ट मैनेजमेंट में इकलौता ऐसा स्टार्टअप है जो सबसे ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज के साथ काम करता है, जो सबसे ज्यादा रोजाना वेस्ट को हैंडल करके उसको साइंटिफिक सोल्यूशन दे करके वेस्ट से वेल्थ बना रहा है. और इसमें उन्होंने टेक्निकल इनपुट्स बहुत सारे लिए दुनिया से, एक्सपर्ट से, और आज वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. They have got IoT involved in these projects. They have got robotics involved in this project. They have got mechanical engineering involved in this process. So इस तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी को इसके अंदर शामिल किया. So किसी भी स्टार्टअप को अगर वो जब
शुरुआत होती है, स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट, बिकॉज आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट जब बात करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी एज जो होती है वो होती है कि जब वो सेकेंड ईयर में होते हैं, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ स्टार्टअप आइडिया, and then they start from the second year. The next third and fourth year are the best to go for PU, जो उनका POC होता है वो बनाने के लिए, आइडिया को फर्निश करने के लिए, डेमो मशीन्स सर्विसेज बनाने के लिए, एंड टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ different clientele like smart city or municipal corporation or any urban local body, even government on the various scales. So अगर आप सेकंड ईयर से शुरू करते हैं तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते आप अपने स्टार्टअप को बहुत अच्छी शेप में ला सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट का एक बहुत अच्छा कमाल का एक स्टार्टअप है नोवोर्बिस आइटिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्लीन एयर पे काम करता है, आप सभी जानते हैं। वो स्टार्टअप भी मैं भी उनसे सौभाग्यशाली रूप से जुड़ा हुआ हूँ और उनको उनके साथ में काम करता हूँ। हर्ष नीखरा, दिव्यांक और गगन आप सभी जानते हैं, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट। और उन्होंने बहुत अच्छे से इस टेक्नोलॉजी को, बिकॉज अगेन ये टेक्नोलॉजी के जो पीछे बेस था, जो आइडिया था क्लीन एयर का, इट इज गोइंग टू हेल्प टू एवरीवन। ये स्टार्टअप किसी एक स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड, कंट्री या एरिया के लिए नहीं है। इनका जो सोल्यूशन है वो जहां भी लगेगा वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम आता है, इसलिए ये आइडिया भी पिक किया और इसको हाथों हाथ स्मार्ट सिटीज ने लिया। सो जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनोवेशन कैन चेंज लाइव्स, सो द फर्स्ट आइडिया इज दैट यू हैव टू थिंक ग्लोबली। मेरी मेंटर है डॉक्टर जनक पल्टा मगलिगन, जो हमें काफी कुछ सिखाती है हमेशा कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को या स्टार्टअप्स को एक दिशा दें। तो उनका एक बहुत अच्छा एक टैगलाइन वो हमेशा बोलती है कि थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। तो जब उन्होंने हमें ये सिखाया था तो we started working on that. So as far as the technology is concerned, research is concerned, and data analysis is concerned, we took the entire details globally. But when we wanted to help actually and work, then we came to the grounds of our own city. हमने वहां पे काम किया, वहां के लोगों को इसमें शामिल किया, वहां के लोगों की समस्याओं को जान करके उस डेटा को कंपाइल करके उस डेटा पे काम करना शुरू किया, and the results were great. And when these local results presented towards the authorities, तो वहां पर हमें जबरदस्त कामयाबी मिली। वो चाहे सर्टिफिकेशन एजेंसीज हो, वो चाहे टेस्टिंग लैब्स हो, वो चाहे क्लाइंटल हो जो कि आगे चीजें खरीदेंगे, उन सभी जगह पे ये वेलकम हुआ, क्योंकि इसकी जो अप्रोच है ग्लोबल होते हुए भी लोकली वो इफेक्ट कर रहा था। सो मेरा जो आपको ये सब बोलने का एक मंतव्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर subject is that it should benefit local, it should benefit local people, it should benefit masses. Then the innovation is going to create a new milestone. It is going to, you can create a history, and actually the startup can be a great success in all the manners. So एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। आई होप पीपल आर getting my points, and the things are conveyed to them. एक अगली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि आप काम कर सकते हैं, where all these innovations tech startups can take lead. So right now, government of India is very serious about it, and they have identified few areas like IT solutions, IoT solutions, infrastructure development, real estate is a big sector. Solar energy related startups are very much required, and they are not only required in India, they are required globally, and specifically United Nations like institutions are promoting them like anything. There would be two things. One is you have any technical idea, technology based idea है जिसका प्रोडक्ट बन सकता है, और दूसरा है एक टेक्नोलॉजी। When we talk about a product based startup or a technology based startup, there are two different things. So आपको ये identify करना बहुत महत्वपूर्ण है that on which type of sector you wanted to concentrate. When you talk, अगर आप एक टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं
then ये होता है सबसे बढ़िया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को वेरियस सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते, so that integration with the various kind of startup products or services will give you a global umbrella to spread your technology and spread your business. But when you're talking about a product, then प्रोडक्ट में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन उसका अपना एक बड़ा मार्केट है। देखिए, टेक्नोलॉजी को खरीदने वाले लोग हैं जो B2B सेक्टर के हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है तो उसको आप रिटेल कर सकते हैं, वो आप आम आदमी को भी बेच सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, इट इज फॉर पीपल, इट इज फॉर कंपनीज, फॉर कॉर्पोरेट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज ओनली फॉर द बिग कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स हु आर इनटू प्रोडक्ट मेकिंग। सो आपको शुरुआत से ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हम कौन से स्टार्टअप में जाना चाहते हैं। नाउ, how government can benefit you and what are the opportunities available? So जब हम स्मार्ट सिटीज की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी जितना भी अर्बन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उन्होंने लगभग 100 स्मार्ट सिटीज बड़ी आइडेंटिफाई की है। They all 100 smart cities are looking for solution in specific areas. But when I talk about one specific term, which is called sustainable development, sustainable development term से आप मेरे ख्याल से परिचित होंगे। That sustainable development एक ऐसा क्षेत्र है जो कि किसी पर निर्भर नहीं रहता और ये लगातार टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड जितने भी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस है, they are most required by all 100 smart cities of India, by the entire government departments, all the institutes, corporates, and even up to a common man. So if you can innovate something which is related to sustainable development, like Novorbis. Novorbis is working for clean air, pure air, fresh air. They want to basically capture the entire polluted air, treat it, make it pollution free, pure one, and give it to the society back. It's a sustainable startup. So if you can work for clean water, air, food processing, environmental based startups, startups which can create, like I'm just giving you an idea, rough idea, like a paper. When you want to make new paper, you have to cut trees. And it's very famous saying that when we cut trees, we make paper, and on those paper we write save trees. So ये पूरा उल्टा है. Now, if you can make a technology, एक अभी रिसेंटली ताइवान की एक यंग बच्चे ने एक नया कुछ टेक्नोलॉजी बनाया है, on which they are making paper from food waste. They are making paper from rice. They are making paper from some of the reused, recycled papers. So there are multiple things. So if you can make some technology, innovative technology, where you can save tree and without tree you can make paper, that would be a great thing. So this type of innovation in health sector is required. In IoT, sensors are very much required nowadays. I know few startups on which we are working right now. The sensors which are of two types. Right now, every college has some labs, and they also provide guidance that how to work with sensors. So, a startup which are using sensors, just integrating them and making a product, which is good. But if you can use such sensors to provide some solution, see, there are two things. One is you can make some devices which measure things. Pollution measure करता है, एयर फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लाइट को मेजर कर सकते हैं, तो एक तो ये डिवाइसेस बन सकते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीस सेंसर्स शुड बी द कॉज ऑफ सॉल्यूशन, देन दे आर अ बिग थिंग. अभी फिलहाल में इफ यू वर्क ऑन IoT specifically in the sector of saving power, there is a startup from Pune which has been nominated for the top 10 startups in India last year. I know them personally. They have automated through IoT sensor-based thing.
and some of the software thing. So they integrated these sensors and software and made a solution for the power saving automation for a particular corporate company. So they automated one corporate house and they automated one hospital, a big hospital of around 750 bedded hospital they automated. And they were able to save 70% of electricity per month. Can you imagine 70% of electricity? जब कोई हॉस्पिटल का बिजली का बिल आता है तो वो बिजली का बिल हमारे जैसा नहीं होता हजारों में, वो लाखों में होता है। और उस हॉस्पिटल के बिल करीबन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए तक महीना के आते थे। और जब इन्होंने ये इसको लगाया तो उनके बिल सीधे 70-80 हजार रुपए और 50,000 रुपए तक भी आ गए। तो दिस वाज एन इनोवेशन। नाउ दिस प्रोडक्ट, दिस सर्विस, they both are going great in that city. And now a big investor is there. People wants to come into the company. They want to take it to the smart cities. They want to take it up to home level. कि कैसे हम इन सेंसर बेस कर सकते हैं, कैसा सेव कर। In solar, people are working with solar cookers, solar uh, heaters, solar-based charging stations, even how to make a house sustainable. So you can take this kind of a domain where you can innovate something which can basically help a particular device to work in a better manner. So that innovation is required. In health sector, there are several kind of technology required that is there. On if you talk about transport and logistics, that is going to be huge. Now, after pandemic, you have understood that what is the importance of home delivery. So in home delivery, you know that everything is coming at home now. तो चाहे आपकी शॉपिंग हो, खाना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपके बिल्स हो, एवरीथिंग इज कमिंग टू होम। और डिलीवरी जब बात करते हैं, जब जिसमें जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, तो डिलीवरी पे लॉजिस्टिक्स इज अ बिग थिंग। वहाँ पर इनोवेशन सोल्यूशन की बहुत जरूरत है। Specifically, when I talk about generation next solution in logistics, that is drone. So for drone, there is a huge scope in India. Current, we are a big country, not only area wise, number wise. Population जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा बाजार भी हमको देती है। Why India is the favorite country of all these developed countries? Why we are the favorite market for them? It is because of our number. So if you can develop something, some innovative solutions which is based out of drone. Let me tell you, in waste management, drones have become a great help. When you talk about agriculture, drones are great. Nowadays in Punjab, if you talk about drones, रेंटल मिलने लगे हैं। वो उस पे जितने भी बड़े बड़े खेत होते हैं जो एकर्स में होते हैं, they do the pesticide spray over there. Although मैं पेस्टिसाइड्स का घोर विरोधी हूँ कि हमें उसमें नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर आप बायो पेस्टिसाइड्स की भी बात करें, जब आप ऐसी कुछ जैसे नीम का पानी भी छिड़काव करना है या कुछ और तरीके से आपको सर्वेलेंस करना है, इवन पेड़ों पे ऊपर सर्वेलेंस करना है, जंगलों में सर्वेलेंस करना है, drones are the best. Even the surveys, event management, wherever you talk about, the drones are the technology. So innovative solutions and innovative ideas regarding drones, how to manage them. There are few things which are very much related to vehicle industries. Automation in automobile sector is very much required. So that is again a big thing, because if you talk about, जैसे इंदौर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंदौर नगर निगम में हर एक घर के पास और सामने गाड़ियां आती हैं। आपको पता है कि आपके यहाँ पर गाड़ियां हमेशा टाइम पे जो आती हैं, वो क्यों आती, कैसे हुआ ये एकदम से सब? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, नो डाउट। एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नर, ऑफिसर्स और जो वर्कर्स है उनका तो कमाल है ही। इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा काम। जब ये शुरुआत हो रही थी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दो चीजें करी। One, they bought us the GPS device for each and every vehicle, so that they must know that where the vehicle is right now, position. Secondly, they have given the GPS watch for every municipal corporation employee. इंदौर में हर एम्प्लॉय के पास अपनी एक GPS वॉच होती है, so they cannot lie, and it has to be moving always. ऐसा नहीं कि वो घर पे रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो गाड़ी में रख के और खुद कहीं चले जाए. It is not possible. Through IoT, they have managed
दैट कौन सी गाड़ी कितनी बजे कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी, उसका राउट जो है वो क्या उसने चेंज किया था, तो उसके ऊपर अलर्ट्स डाले गए हैं। सो कंट्रोल कमांड सेंटर हमारा जो है वो इंदौर का वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, बल्कि इंटरनेशनली कॉम्पीट कर सकते हैं वो है। सो वो सारा कुछ बेस्ड रहा सेंसर्स पे, जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी को जब इंटीग्रेट किया एक प्रोडक्ट के रूप में, कितना पेट्रोल है, गाड़ी कितना चल रही है, गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है, किस वार्ड में गई थी, किस में नहीं गई थी। सो द एंटायर मॉनिटरिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास जीपीएस और सेंसर्स की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये वैसे ही हाल चल रहे होते कि हाँ साहब मैं वहां गया था, ड्राइवर बोलता मैं गया था लेकिन मुझे कचरा ही नहीं मिला, और नागरिक बोलते हमारे पास गाड़ी नहीं आई, कचरा यहाँ रखा हुआ। बट नाउ विद दिस टेक्नोलॉजी वी डू नॉट हैव टू यूज कैमरास। आपको सीसीटीवी करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जहां पर ग्रीवियंस आता है, जहां प्रॉब्लम्स आती है, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल टेक्निकल सॉल्यूशन। अगेन टेक्नोलॉजी कम्स, आईटी। We have got an app, beautiful app called 311. So Indore is a very good example for all such things. So 311 app, commissioner has made it mandatory that आपको 311 ऐप के अंदर जो भी शिकायतें मिलती है वो विद इन 24 आवर्स सोल्यूशन उसका करना है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से, इनोवेटिव सोल्यूशन की वजह से हमारे पास बहुत सारा काम। इंदौर स्मार्ट सिटी की मैं बात करूं तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ स्टार्टअप्स, इनोवेटिव स्टार्टअप्स, हाउ इट कैन बी बेनिफिटेड टू द सोसाइटी। They are looking for sensor based solutions, they are looking for mechanical solutions where they want to avoid the huge electricity usage. They are looking for solar solutions, they are looking for automation, they are badly looking for automation, they are looking for solution for agriculture, they are looking solutions for the logistics, they are looking solution for EVs। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल जो भी फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो रहा है, रेट्स बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स बहुत ज्यादा हमारे पास है, उससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की 2030 तक दे वांट टू मेक मोस्ट ऑफ द व्हीकल ऑन बैटरी, ईवीज लाना चाह रहे हैं। वी आर right now lacking for a solution in the EVs, so even we can work on EVs। उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन में ईवीज कैसे ला सकते हैं वो देख सकते हैं, आप उसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे ला सकते हैं वो देख रहे हैं, माल ढुलाई के लिए ईवीज कितनी कारगर है, अभी उसमें बहुत बड़ा काम होना बाकी है, बिकॉज ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक नेटवर्क बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे नाउ इसकी कॉस्ट तभी कम हो पाएगी जब हम ये देख पाए कि हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। सो ईवी इज अ big I would say market. Even for the scooters, if you talk about cars, you talk about drones, everything is required right now। even लोग battery based बहुत सारे ऐसे solutions हैं they are looking for, which are very much related for their equipments and households। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा, and IoT again sensor से मैं बात करता हूँ। So if Acropolis, like I have a great respect for this institute because they are very much up, the entire management is very much up and helpful, and they organize such kind of program, and I have seen the list of people, eminent speakers who are going to come and benefit these students। So I'm very happy that this is a very positive sign कि हमारे local colleges में से ऐसे लोग, ऐसे बच्चे निकले, ऐसे स्टार्टअप के आइडियाज निकले जो कि आगे चल के बड़ा कमाल करें। मैं स्पेसिफिकली आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल सर्कल इन इंदौर। मैं जैसे मैंने आपको बताया मेरी मेंटर है डॉक्टर जनक पलटा मगलेगन। मैं अपने काफी सारे दोस्त जो कि कॉर्पोरेट के बड़े नाम हैं, मेरे सारे दोस्त काफी बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ। फिर हमारा एक बहुत अच्छा स्टार्टअप का सर्कल है, हमारा सर्कल है जिसमें बहुत सारे डेटा एनालिस्ट हैं, मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग मिल करके उनको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेट करते हैं, और हम लोग फॉर्मेलिटीज से ज्यादा प्रैक्टिकल की बात करते हैं, किस तरीके से एक स्टार्टअप को हम एक्चुअल में हेल्प दे पाए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा जो पूरी दुनिया में जो स्टार्टअप्स के सक्सेस का रेशो है वो 5% है, उससे भी कम है। लेकिन जितने भी स्टार्टअप्स हम लोगों ने आज तक लिए हैं
उसमें सक्सेस का जो रेशियो अभी तक हमारा रहा है वो 95% से ऊपर का रहा है। बाकी जो 5% है वो भी हमारे अभी तक असफल नहीं हुए, उस पर काम चल रहा है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो जब भी ऐसा कुछ होता है, सो मेरा आप सभी लोगों से ये सजेशन रहेगा, वो सजेशन रहेगा और ये आपसे अनुरोध रहेगा दैट इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ अ हेल्प through college, through Acropolis College, we are always there. That how we can help, how we can furnish your idea, how can we can refine your idea, how we can help you to develop the POCs, proof of concept, how to register yourself into various kind of schemes of government, how to get funds, how to help you with the various experts, किस तरीके से हमें जहां जहां से हेल्प मिल सकती है, so that we make an environment, an ecosystem which is going to help you to grow as a startup and become a successful startup. We refine you, we help you to make your idea and solution so practical that वो असफल नहीं हो सकता। मतलब हम इतनी तैयारी करते हैं और कोशिश ऐसी ही करनी चाहिए हमेशा कि किसी को फेलियर होने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी चाहिए, सक्सेस होने के लिए नहीं, क्योंकि सक्सेस होने के लिए हम इतना काम करेंगे कि हमें सक्सेस मिलेगी ही। सो आइडियाज सभी अच्छे होते हैं, उन्हें समय पर किस तरीके से हम जो जरूरत है उनके हिसाब से अगर ढाल पाए, उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए होती है आपका कॉलेज करता है, आपकी आईटी सेल करेगी, आपके स्टार्टअप सेल करेगी। बाहर जब कॉलेज की आप बात करते हैं तो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो मदद करने के लिए हमेशा आगे हैं। सो द थिंग्स इन इंडिया एट द टाइम इज रियली गुड, आई वुड से। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप का भविष्य अगले 10 साल बहुत ज्यादा गोल्डन। एंड इफ यू रियली मेक वेरी स्मॉल थिंग इवन, that is going to be big because the idea of integrating that technology to various kind of allied businesses, allied products and allied innovation is going to be great. So आप कभी कोई छोटी चीज भी बनाए, वो भी एक बड़े स्तर पे जा सकते। तो अभी फिलहाल IoT is going to be a great thing. Sustainable development में टेक्नोलॉजी में इनोवेशन is going to be big. सोलर में it is going to be big. सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, अभी हम बात करेंगे सिक्योर नेटवर्क्स बन रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आर्मी में, डिफेंस में बहुत बड़ा काम आ रहा है। डिफेंस में और स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ IT related startups are required, where videography, where the private network can be made on various technology, sensor based, and they can actually work coherently with various kind of machineries and system। उसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड पे एक कैमरा लगा रहता है, अमेरिका या हम यूरोप की गाड़ियों की बात करें तो भारत में वो चीज़ अभी नहीं है, वो बहुत ही अफोर्डेबल नहीं है। आप चाहे तो किस तरीके से आप इस सोल्यूशन को दे सकते हैं जिससे कि बहुत सस्ते में ये काम हो जाए, उसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सर्वेलेंस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप। सो अगर हम वो कर सकें तो भी बहुत अच्छा है। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ एक वेबसाइट्स भी हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे चीजें जो आपको टाइमली देखते रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है स्मार्ट सिटीज को लेकर के, स्मार्ट सिटीज। अगर आप बात करें smartcities.gov.in, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको लेटेस्ट स्मार्ट सिटीज की रिक्वायरमेंट और डेटा पूरा मिलता रहेगा। उसमें सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं, उसमें टेंडर्स होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं। ट्राई टू विजिट सच वेबसाइट्स वेरी रेगुलरली, यू विल हैव एन आइडिया। सो वो इस आइडिया से आपको मालूम पड़ेगा कि अभी हमें किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, और साथ में ये भी मालूम पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कितने फंड्स हैं, कौन से वहाँ शहर में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप वहां जाके पिच कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो वेबसाइट है smartcities.gov.in, उसको विजिट कीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूँ, startupindia.gov.in। हर एक स्टार्टअप को इस वेबसाइट को रोज देखना चाहिए। इसमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि भारत की सरकार
वो इतनी ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकती है, आज की तारीख में वो है। रोजाना कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, रोजाना कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। स्पेसिफिकली कॉल आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि दे नीड टेक स्टार्टअप्स, एंड दीज टेक स्टार्टअप्स आइडियाज शुड बी सबमिटेड टू देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दे कॉल। इट हैपेंड विद अस, ये हमारे साथ भी हुआ है। हमने भेजा और वहां से कॉल आया और उस पे बेसिस पे हमने प्रोडक्ट बनाया। तो ये चीज बहुत एक मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा हमारा एक भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, dst.gov.in, dst.gov.in। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक बेस्ड स्टार्टअप है इनके लिए एक काइंड ऑफ मदर इंस्टीट्यूशन हो सकती है। मेट्रोपोलिस कॉलेज से मैं अनुरोध करूंगा मैनेजमेंट से कि भविष्य में हम चाहे तो बहुत सारे जितने भी आपके बच्चों के स्टार्टअप है उसको डीएसटी के साथ जोड़ करके कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। स्टार्टअप्स की जिम्मेदारी बनती कि वो डीएसटी की साइट पे जाए, वहां पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप इसको डीएसटी को भी देखते रहिए। So these are few things which I wanted to tell you guys. मेरे ख्याल से 30 मिनट से ज्यादा लगभग हो चुका है और बहुत सारे हो सकता है कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी हो, तो I would request the hosts to take it ahead कि अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो we can take those questions. आरती, अंजलि। Thank you so much, sir, for such an insightful आपकी session. आवाज Now, नहीं आ रही। beginning with our question answers round. आपकी आवाज नहीं आ रही। Thank you, sir. Sir, now audible? No. I'm not getting that. Now audible? I can read the question which you have typed. Okay, sir. What should be our mindset while implementing our startup? Is it the question? Right? Yes, sir. But kindly correct that why I am not getting your voice. आप तब तक उस पे काम कीजिए। तो देखिए जब माइंडसेट की बात आती है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, जब भी आप कोई भी स्टार्टअप खोलते हैं और यू हैव एनी आइडिया, don't think that you are going to make some specific magical device which is unique in the world and you are going to make millions out of it. No, never. The most important thing to build or develop an idea or to start something, think about the problems of the world and present a solution for that. If you are able to do that, I'm telling you, you are 100% successful. You don't have to go for money. Money will run after you. If you talk about any example, आप कुछ भी किसी भी एक स्टार्टअप की बात करें, अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप की अगर आप बात करते हो, हर एक कोई की नाम आता है गूगल, राइट? गूगल का प्रोडक्ट क्या है? द फर्स्ट प्रोडक्ट दे ऑफर्ड, सर्च इंजन। क्या करता है? किसकी मदद करता है? दुनिया के हर इंसान की मदद करता है। दैट्स व्हाई इट इज नंबर वन। एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया जिसमें आप अपनी दुनिया की जो इच्छा लिखो and it gives you the entire knowledge which was not available when I was a student. आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कोई एक चीज ढूंढनी थी, मेरे को पहले तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप बनाने में परेशान हो गया, फोटो खिंचाने जाने के में परेशान हो गया, उसके बाद वो बुक लेने गया तो बोले वो किसी और को दी हुई है। यू आर लिविंग इन अ नेट एज। हम लोग जेट एज के थे जब जेट इंजन आया था, आप लोग नेट एज के हो गए। एवरीथिंग यू हैव इन योर एट योर पाम, एट योर क्लिक। सो ट्राई टू यूज दैट। सो जो आपके माइंडसेट में होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप है, वो प्रोडक्ट बनाओगे या सर्विस बनाओगे, उसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं है। बेचोगे किसको? आम आदमी। सो व्हेन यू डोंट हैव एनी आइडिया टू हेल्प अ कॉमन मैन, द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू सर्व दैट। ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात है कि एक आदमी सिर्फ बिजनेस के लिए स्टार्टअप खोलता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट, but if you really want to make it successful and
all the manners, money, welfare of the society, and name and fame to you, to the entire world. That is only possible when you think about the world. And again, it has to be sustainable. It should be beneficial for the planet. It should be environment friendly. आपने ये सब किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो बेसिक हर्डल्स हैं किसी भी जगह पे प्रोडक्ट बेचने के या सर्विस बेचने के या आइडिया बेचने के, वो सब साफ हो जाते हैं। एक आदमी कुछ लेकर के आया, आप खुद सोचिए, इफ आई मेक यू जूरी मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपटीशन, एक स्टार्टअप कंपटीशन है, उसमें अलग 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 लोग लेकर के आए हैं। हम उसमें एक प्रोडक्ट देखते हैं, किसी ने साहब ये डिजाइन किया, साहब ये रोबोट बनाया है, ये रोबोट जो है कांच की सफाई करेगा, ये रोबोट फर्श को साफ करेगा, रोबोटिक्स है, आईओटी है। दूसरा लेकर के आया कि साहब ये एक मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिससे कि आप किसी भी स्टील में और उसमें ड्रिल कर सकते हो, और इसके अंदर बहुत तेजी से काम होता है, बहुत फास्ट काम करने होता है। एक लेकर के आया कि साहब मैंने एक ऐसा इंजन बनाया है जो 1000 किलोमीटर स्पीड पर दौड़ता है। और मीनवाइल ये सब करने के बाद एक आदमी एक ऐसी चीज लेकर आता है कि सर मैंने ये एक ऐसी चीज डिवाइस बनाई है जिससे ये किसानों के लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है कि एक तो वो आत्महत्या नहीं करेंगे, साथ में जो हमारे किसानों का प्रोड्यूस है, आपको पता है जितना भी किसान भारत के उगाते हैं उसका 60% वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनको स्टोर करने की अभी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज नहीं है, इनोवेशन नहीं है। तो अगर आपने वो बनाया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये वाले स्टार्टअप को हाथों हाथ ले लिया जाएगा। और आप जो भी स्टार्टअप बनाएंगे दैट हैज टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड मैनकाइंड। तो वो स्टार्टअप, वो टेक्नोलॉजी लॉन्गर टाइम तक सस्टेन करेगी। और आपकी चीज, जैसे गूगल इज नाउ वर्ल्ड्स प्रॉपर्टी, भले ही वो एक कंपनी उसको ओन करती है, लेकिन विदाउट दैट यू कैन नॉट थिंक। सिमिलरली आप डोमेन को चूज कीजिए। आपको जब भी स्टार्टअप बनाना है, माइंडसेट ये रखिए, सबसे पहले आप अपना एक फील्ड चूज कीजिए, और वो फील्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, आपकी पैशन का होना चाहिए। आप वो चूज कर लीजिए, उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उठाइए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उस पे काम कीजिए। जब आप बेसिक काम कर लें कि हाँ इन तरीकों से सॉल्व हो सकता है, फिर उस फील्ड के किसी एक एक्सपर्ट के पास जाइए कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। और आप चिंता मत कीजिए कि कोई आपका आइडिया चोरी करेगा, कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। और अगर कोई चोरी कर भी लेगा तो वो नहीं कर पाएगा जो आप करना चाहते। तो नेवर वरी अबाउट दैट। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वाकई में मदद करते हैं, जो समझदार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो खुद भी ऐसे विचारों वाले हैं कि दुनिया के लिए काम करना चाहिए। उनके पास जाइए, खुल के बताइए, वो आपके आइडिया को रिफाइन करेंगे, आपको 3 नए इनपुट देंगे, और फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। तो माइंडसेट हैज टू बी sustainable development, mindset has to be welfare of the society, mindset should be that my purpose of life, अपनी लाइफ बहुत छोटी है, 50-60 साल की है, उसमें मैं दुनिया को क्या देके जाऊंगा, that should be the mindset. We can go for the next question. Yes, sir. Thank you for the response. Sir, the next question is, what will be the role of electronics in the current role of the situation? electronics in the situation of COVID-19, right? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे सारा काम चल रहा है। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आज की तारीख में कुछ भी सोचना संभव नहीं है। When you talk about COVID-19, specifically when I talk about businesses, they are collapsing, economy is going down, but खर्चे बढ़ रहे हैं। Electronics can help us in reducing expenses. The combination of IoT and electronics can create magic. As I told you about a startup which was IoT based, is doing great. Home automation, electronics can do a lot. India में home automation कितना % हुआ है आपको पता है? 0.07। आपके लिए 99 point something मार्केट है। सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। आज भी गांव में जब हम जाते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसा आप करें जिससे कि मैं मोबाइल से ही प्रोजेक्शन इतना कर दूं। अब जो सारा ऑनलाइन एजुकेशन आया है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। we need some innovative technology जो कि एक गांव को ही पूरा बड़ा सा एक ऐसा कोई स्क्रीन दे दे बिना टीवी खरीदे,
जिससे कि उनको सारी चीजें बड़े स्तर पे बताई जा सके, स्कूल्स को पढ़ाया जा सके। आप स्कूल्स के नंबर्स नहीं सोच सकते कितने हैं पूरे देश में। सिर्फ अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, we have 50 districts. In 50 districts we are having more than lakh of schools. लाखों की संख्या में स्कूल्स हैं, बट उनके पास तो अब ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं हो, तो सब बैठे हुए हैं। आप सिर्फ इंदौर की बात करें, इंदौर में हंगामा है कि हम कैसे पढ़ें, जो दिन भर मोबाइल चलाते हैं, they do not know how to operate. So think about people who are living in villages. Can you design something through electronics that कम से कम एनर्जी में बड़े से बड़ा कुछ ऐसा solution मिल जाए where they can actually study in masses, right? Yes. So there are a Smart lot of things to platform. be done. For that, you need to research. You need to see the problem statement of the country through internet. You need to talk to people of villages. You need to talk to people of cities. You need to talk to people of education industry, pharma industry, infrastructure industry, real estate industry. Talk to them and get their problem statements. Then you will be able to come with a solution. Proper solution. I'm not getting your voice. मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही. I think the host has done some settings, sir. Sir, am I audible now? Sir, is my voice I think sir is facing some issues, so we'll just wait for some time to get him connected back. आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Can you hear me? Now I can listen to you. Yeah. Okay, sir. So we'll take our next question. Yeah. Sir, the question is, do you think companies such as Tesla Electric would play a role in changing the electric vehicle sector in India? Yes, very much. And if you have heard about Tesla and the CEO himself, when asked about that when they are going to come to India for sure, so he Yes, has sir. said that in 21 we will definitely be hitting the Indian market. Now the Tesla is going to hit India's automobile sector in a different way because they are very costly. So they are going to cater to a very limited, population of India, but they are going to give us an idea. See, when somebody Yes, has made a first car, then the common man also thought about that. हमारे पास car कब आएगी? So a lot of different companies they come and they made the similar cars in an affordable range. Similarly, is going to happen with Tesla. So Tesla is going to hit our market on a lesser scale, but on a larger scale, it is going to hit our mindsets. It is going to hit the various player, the automobile industry, which is working on the fossil fuel right now. So a lot of startups will be coming that how they can afford, they can offer a good car like Tesla to the public, to the middle class people, middle class segment. That is the biggest segment they are going to afford the cars. And secondly, the logistic, agriculture, everywhere. So they are going to hit the mindset, not on a big scale that the cars will be available for everyone from Tesla, no, but they are going to inspire various big giants like Tata, Ford, Firodia Motors, Bajaj, such kind of people, and they are going to come up with that inspiration that how they can capture Indian market, and that is going to be done for sure. so they'll be playing a big role in changing our mindset, and Yeah, that like would be great for our Apple, future. yeah, like Apple has changed the mindset of Indians. Apple हमारे यहाँ पे हमेशा से बहुत महंगा फोन रहा है, लेकिन उसने जब फर्स्ट टच दिया तो आपको मालूम है हमारे टच स्क्रीन वाले फोन 3,000 रुपए से शुरू होने लग गए. Now everybody Yes, wants to have a smartphone. So उसने एक पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया था. That is going to happen with us. So Tesla is going to yes, give us some standards. On those standards, the other players are going to meet them in affordable prices. Then the cheaper option will also avail, and the smarter option will avail. And very soon they will come
with a better option than Tesla. So Tesla, you can say an iPhone, but a lot of companies will come with the Android versions, like smaller, cheaper options, like Tesla to us. That is going to be there. Yes. So we'll take our next question. The question is, sir, is there the key difference between a startup and a regular business? That startups have to be something related to mass problem solving and innovation. So the question is about are startups related to mass problem solving and innovation? Okay, this is a very good question. I think everyone has this question, and most of the people, they do not know that what is the difference between a business and a startup business. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ ये इशू है, they do not know this difference. So first of all, we should know that what this difference is. तो सबसे पहले अपन इसी पे बात करते हैं. Yes, sir. A startup idea is always a unique idea which is not right now available in the market, which is unique in its approach, in its innovation, and solving the problems. That has to be there. Like अगर मैं आज टीवी की दुकान खोलने लग जाऊं, शोरूम डाल दूं, वो स्टार्टअप बिजनेस नहीं है. लेकिन That's a मैं एक regular. ऐसा टीवी लेकर के आऊं और उसकी मार्केटिंग करूं और उसको लोगों तक पहुंचाऊं जो कि बिना बिजली के चलता है. Yes, it's a startup idea. Yes. Getting it? It has to be something unique. It is not necessary कि वो सिर्फ masses के लिए ही बने. Masses के लिए बनेगा तो वो definitely famous होगा, वो ज्यादा important है. लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ बनाया which is going to give a great help into medical world, जो कि सिर्फ doctors को help करता हो, yes, it is a startup idea. Like I know a young guy from Ujjain. He's working right now in Gulf country. This young engineer has developed a new technology that without being there, you can have a remote surgery. He has developed a robotic hand. That hand is actually capable to hold a surgery tool and do the cutting and sewing and several other operations which normally a doctor does. That can be done. So now, so that is a startup, and that technology he's selling to the various hospitals and organizations, and he has got the FDA and other clearances from the USA as well. So that is also a startup. So startup has to do with the idea. It has to be unique, which is not available right now. That is a startup. Secondly, it should help masses. And third, it is integrated with some technology, which is innovative. जो अभी है नहीं. That is called startup. All right. So I think we can proceed to our next question. Sir, why are Indian microprocessors like Shakti not included in industrial market yet? Okay. When you talk about Shakti, there are several things. As I told you, when you start your startup and you want to go big, there are various phases for any startup. This not only includes the innovative part, the production part, assembly part, certifications, market analysis, business plans, and then investor. When we go through the entire such kind of steps, we come to know that what our product actually is. Sometimes we feel, not sometimes, I would say every time we feel, if I have made something, it is the best. Yes, sir. And when we go in a bigger scenario, when we move from Indore to Delhi, we come to know, oh, there are 2 more startups working in the same segments. Oh, uska ye acha, lekin ye mera bhi better hai. When we move towards Korea, America, UK, Singapore, Australia, New Zealand, we come to know that there are hundreds of startups working in the similar area and they have better products than us. And one more problem, हमारी जो अप्रोच होती है वो कभी भी लर्निंग की अप्रोच खोनी नहीं चाहिए. नॉर्मली वी स्टॉप लर्निंग. एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम बंद कर देते हैं लर्निंग करना बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. ऐसा नहीं कि हमारा हमेशा ईगो ही प्रॉब्लम होता है. देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ बजट्स,
money is a big constraint. Then जो हमारे investors हैं उनका हमारे पीछे back पूरे time करना, because if you are working in technology field, the research and development, there are two terms, research and development, and one is hit and trial. Indians को ये दो में बड़ा confusion है. Hit and trial क्या होता है और research and development क्या होता है. हमारे यहाँ प्रोडक्ट बना जाते हैं, पीओसी ले आते हैं, फिर बोलते हैं अब स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करना है. इट इज नॉट द वे. हमें स्टेप वाइज बढ़ना है, बड़े मेथड से बढ़ना है. अगर आप उसको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हिट एंड ट्रायल छोड़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है. और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब हम काम करते हैं तब हम हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं. शक्ति का जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. हमारे यहाँ से कभी भी कोई ऐसी बड़ी मशीनरी टेक्नोलॉजी अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गई है कि वो एक प्रोडक्ट रूप में बाहर आ जाए. उसका कारण यही है कि हम लोग हमारे R&D मेथड्स पे बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं. और फिर उसको, क्योंकि कंपटीशन उसको जब आएगा तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आएंगे. आप ये नहीं बोल सकते कि भारत में बना है तो भारत की गवर्नमेंट सिर्फ हमारा ले. अरे हो सकता है हमारा उतना अच्छा है ही नहीं और हमें मास लेवल पे बड़े काम करना है, ज्यादा आउटपुट चाहिए. सो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं. और शक्ति में अभी बहुत सारे और भी आगे सुधार भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें उनको बोला है काफी सारी चीजों को करने के लिए. और दूसरी एक और चीज भी बात होती है कि कई बार हमारे पास मार्केटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते. वी नीड मेंटर्स, वी नीड मार्केटियर्स दैट दे पुट आवर प्रोडक्ट अप टू अ राइट शेल्फ जहां से वो बिक जाए. दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो आपको मैंने जो एक वेबसाइट बताई थी smartcities.gov.in बताई थी. सो उसमें और साथ में एक और वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमेशा एग्जीबिशंस और एक्सपोज की खबरें आती हैं. हर एक स्टार्टअप को इन एग्जीबिशंस में, बिकॉज आपके लिए एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन लाइक एक्रोपोलिस बिहाइंड यू. दे आर रेडी टू स्पॉन्सर यू एंड सम ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से स्टूडेंट्स के लिए ये सारी एग्जीबिशंस फ्री रहती हैं. गो देयर, see that what type of similar competitions you have, what type of investors are available in the market, and what type of product placement you should do. You will see that how a product is placed. जब आप वो समझने लगेंगे, जब आप एक्सपो में जाएंगे, आप स्मार्ट सिटी एक्सपो होने वाला है अभी 2021 में, अगर वो वर्चुअल न होकर के ऑफलाइन मतलब एक्चुअल में होगा 24 to 26 मार्च 21 में है प्रगति मैदान में. आपको जाना चाहिए सभी को. आप सभी लोग रजिस्टर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है शायद स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो एक्रोपोलिस विल डेफिनेटली गोइंग टू अरेंज. आई एम आल्सो गोइंग विद वेरियस स्टार्टअप. आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहें तो आई विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. आप लोगों को मैं मदद करूंगा. अगर आप पूरा कॉलेज की तरफ से जाना चाहें तो मैं कॉलेज को भी मदद करने के लिए तैयार हूँ. ये आपके यहाँ पर इसके अंदर करीबन 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने रजिस्ट्रेशन किया है. वहां पर इतने टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यू विल बी अमेज्ड टू नो. आप बिलीव नहीं करोगे, वंस द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वेंट टू दुबई. वहां से आने के बाद मेरा जो बड़ा मेजर माइंडसेट चेंज हुआ था. मैं सोच ही नहीं पाता था इंदौर से ऊपर या भारत से ऊपर. लेकिन जब आप इन बड़ी लेवल पे इतनी भीड़ में जाते हो, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको लोग मिलते हैं जो कि इंस्पायरिंग है, आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं जो वेरियस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि कैसे मुझे क्या बनाना चाहिए या मैं इस पे बना सकता हूँ. आपको कई सारे ऐसे नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं वेर यू माइट गेट न्यू इंटरेस्ट एंड गो टू अनदर लेवल ऑफ इनोवेशन. सो आई वुड से broaden your thought process, broaden your approach, and try to visit more, travel more, and attend such type of exhibitions and expos. So you will understand कहाँ पर business level पे कहाँ ऊपर जाना है, innovation के level पे कहाँ ऊपर जाना है, placement कहाँ requirement है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी अपॉर्चुनिटी सब आती है. वहां पर स्मार्ट सिटीज पवेलियन है, वहां पर MSME का पवेलियन है, वहां पर DST का पवेलियन है. वो सब आपके लिए बने और किसी और के लिए नहीं बने, सिर्फ इंडियंस के लिए बने. गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. Okay, thank you so much, sir, for answering all these queries in the best possible manner. And now I would like to hand over the session to Daksh Porwal for the vote of thanks. Thank you, sir. That was a very gripping session. I hope I'm audible, sir. Yeah.
Oh, okay, sir. So it's always said that opportunity knocks only once. But after today's talk, I must say, if opportunity doesn't knock, build a door. The attendees understood the number of opportunities that are present for them, and that too in the government sector. Your knowledge made the students aware of the world of innovation. Your presence made this industrial conclave an open-hearted and a productive affair. So, on the behalf of Institution's Innovation Council, Electronics and Communication Department, I would like to extend my heartfelt gratitude towards you for sparing time out of your schedule. And of course, I would like to thank the audience for attending this session and making it an interactive one. Hope to see you all tomorrow at the same time for another exciting session in this industrial conclave by Mr. Pranay Wangle. And again, sir, a heartfelt thank you to you, and we Thank wish you, dear. you luck for your future endeavors. Thank you very much. Thanks a lot to everyone and to the entire team who is arranging this conclave, and my best wishes for the future programs as well. And you can always be in touch. And thank you to Acropolis. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.